consumer spending. And now our strength is that the sowing is good, so the yields may be better. So the farm sector can produce some, because you've had a good monsoon. That's one of the impact. Our weakness is private sector. Banks still struggling. So if we keep these factors in front, I had to spend more. And therefore the government had to keep up its spending. Now, in order to spend more, do I just increase the number of schemes, or do I pick up the most successful areas which have yielded results in the last few years, and I spend on them? And on merits, the first area that deserved spending was rural agriculture. So I do a large part of spending there. I do it in irrigation, I do it in rural roads, I do it in rural housing, I do it in the rural farm sector, insurance and so on. So I do a lot of spending there. The second area, keep continuously increase in the social sectors. So we maintained a steady flow, increased it. The third area, in a big way, concentrate on infrastructure. 3,96,000 crores, out of which over 2.5 lakh crores is only transportation. So you enable in a country like this movement. So I have concentrated on spending in these areas. Railways today, out of 1,31,000 crores, I am supporting it 55,000 crores. Now that puts a question mark on the railways itself, but that was a necessity because the railways is an essential part of our life. Highways, ports, telecom connectivity, smart cities, rural roads. Now these are all success stories which are emerging, and therefore I had to build on those success stories. The second thing that weighed on my mind was that what does the economy and the country need today? I therefore, for the first time in the budget, a finance minister has given an honest data that we are a non-tax paying nation. Very few people do it. And therefore the burden of taxation comes on the compliant and the taxpayer, because he has to pay his share and the evader's share. So I go hard on the evader, and I must give some relief to this man. At the same time, I have multiple purposes in giving relief to the small taxpayer. There will be more money in his hand. There is an inflation index which has added up to his cost. And then I want to make paying tax for the evader an attractive proposition. That by paying 5%, claiming all these deductions, you can enter the tax net, half a page return, no scrutiny. So I want to expand this base. So I had multiple purposes in doing that. Post demonetization, I wanted to help the MSME sector. So I had a promise to keep. So I extend that concession unconditionally, without exemptions being waived off, to 96% of India's companies. I tell the sole proprietorship and the partnership, switch over to company, you'll pay less tax. You'll have transparent balance sheets filed with the ROC, better banking finance, and you pay 5% less tax. So in one go, 96% of corporate India, the smaller companies, and at the same time, MSMEs are the job creators. Now, so I give this relief to them. I give a relief to the housing sector, which is something I did last year, which is something which I continue to do. Affordable housing becomes infrastructure and so on. I do that. So the idea was all these steps will help. And of course, there are one or two steps which are predominantly ethical but political, that people who make a mockery of the Indian financial and the legal system must pay, and pay hard. So we'll go hard against them. And secondly, I think the Prime Minister had made it a personal crusade on cleansing political funding. So I had a big step to take. And this is a subject very close to my heart. As a law minister, I had taken the first step by exempting them from tax and so on. So
I had to take the next step. That's right. And I think there was a convergence of our opinions, of course inspired under his direction, that we did this. Your second question was... Is on the revenue assumptions. On the revenue assumption, I'll tell you, Mr. Bhattacharya, I think it's better to err on the right side. You saw the UPA government, which would have a big business, budgeted expenditure, a BE, and the actual expense was 1 lakh, 1.5 lakh crore, or 1,20,000 crores less than that. Last 2 years, I have restored the sanctity of the budget. Every year, the revised estimates have been higher. Now, this year, as we end, I end up almost 70,000 plus crores higher in indirect taxes, correspondingly higher to a lesser extent in direct taxes. So with 90,000 crores more of taxes on 31st of March, my revised estimates will be higher than budget estimates. Okay. Last year also they were higher than budget estimates. But don't forget, last year I had the advantage of the additional revenue measures because of the excise. Because of excise. Considering the global oil prices, I don't have this advantage this year. So I have been modest. But if I have more money, because 2 years in a row I have grown 17%, this time I am assuming 12%. But if I do grow 14% or 15%, I'll be too happy. This will be more money to spend. Okay, let me ask you two quick supplementaries before I invite Sanjay to join the discussion. Your entire revenue projections are relying on one item, which is personal income tax, which you project is growing by 25%, whereas your corporation income tax is growing by only 9%, and excise is only 5%, and service tax is only 11%. Now, these are all very, very conservative estimates: corporation tax, excise, and service. Now, you're relying entirely on income tax, which is 25% growing, on top of 23% growth current year. Now, what is it that gives you the confidence that you will continue to repeat the income tax? This year, the personal income tax growth, I mentioned in my speech, is something close to 38%. Now, people who were transacting in cash, and a part of their income and expenditure was in cash, have been compelled to put that money into the banks. When they put this money into the banks, the money lost anonymity. But would it not be a one-off gain in a sense next year? But the further velocity of that money, okay. Now the transactions of that money are going to be more check-centric. So demonetization to that extent will expand. And I think people are going to disclose more. For instance, yesterday's declaration by the CBDT that they have in the first analysis identified 18 lakh people whose cash deposits are disproportionate to their income. So obviously a lot of that is going to come as income tax. So I see a lot of gain in personal income tax. Companies have to do better in order to pay more corporate tax. That's right. And of course the manufacturing will have to pick up in order to pay more excise. Now also don't forget that excise is going to vanish in the middle of the year into the GST. That's right. And therefore the first few months of the GST will be experimental. And then of course when the GST takes over after a couple of months in a big way, then I think the indirect tax collections will expand. Okay. Sanjay, why don't you? सर, आपने जो बात कही, एक्चुअली आप वित्त मंत्री के बजाय बहुत ही निष्पक्ष एनालिस्ट के रूप में भी खुद ही बता रहे थे कि किस कंस्ट्रेंट में आप काम कर रहे हैं। तो थोड़ा उसका हिंदी में आप एक संक्षेप तो बताएं, लेकिन उसमें एक चीज मैं फ्लैग करना चाहूंगा। आप ये मानते हैं कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ने की हालत नहीं है, वो एक कमजोरी है, और पीएसयू बैंकों का जो डूबा हुआ कर्ज है वो एक दूसरा बड़ा बॉटलनेक आपके रास्ते में है। ये दो बड़े पीस को एड्रेस करने के लिए कोई सीरियस थ्रस्ट? देखिए, इसका बड़ा स्पष्ट है कि सन 2003 से लेकर 2008 तक विश्व में बूम पीरियड था। तो जो हमारे यूपीए के मित्र कहते हैं कि हम बड़ा ग्रो किए, वो जब दुनिया तेज चल रही थी तो थोड़े छोटे घोड़े भी तेज भाग लेते हैं। तो वो तेजी का दौर था। तेजी के दौर में हमारे कॉर्पोरेट्स भी डिस्प्रपोर्शनेटली एक्सपैंड कर गए, और उस एक्सपेंशन के बाद जब दुनिया में धीमापन आया और बाजार धीमे हुए, तो उस एक्सपेंशन में उनके पास सरप्लस कैपेसिटी थी। वो कैपेसिटी इतना प्रॉफिट नहीं देती उनको कि वो बैंक का ब्याज भी वापस कर दे, और ब्याज की दरें भी ऊंची थी। और कुछ सेक्टर ऐसे थे तो एक प्रकार डूब रहे थे। अब
मुझे लगता है कि हमने कानून की व्यवस्था बना दी, आरबीआई ने गाइडलाइन सारी बना दी, लेकिन उन सेक्टर्स में से पैसा निकालना ताकि उनके मामले सेटल हों या कुछ लोग अपने प्रोजेक्ट्स बेचें, ये आवश्यक है। आज भी बजट में मैंने एक घोषणा की है कि जो सिक्योरिटाइजेशन कंपनीज हैं उनके संबंध में एक अच्छी मैंने घोषणा की है। मुझे लगता है कि ये एक धीमा प्रोसेस है, ये पीड़ा से भरा हुआ प्रोसेस है, लेकिन दुनिया की अर्थव्यवस्था तेजी हो, भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी हो और उसके बाद लोग धीरे धीरे यहां तो कुछ एसेट्स का रिकंस्ट्रक्शन हो उस प्रकार से, तो ये वापस पैसा बैंकों के पास आता है। सरकार एक सीमा तक बैंकों के अंदर कैपिटल डाल सकती है। टैक्स पेयर का पैसा बैंकों में डालते रहें, इसके औचित्य के पीछे कई प्रश्न अन्य भी खड़े होते हैं, वो एक दिक्कत है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर को इस देश में खड़ा होना पड़ेगा, बैकबोन के रूप में खड़ा होना पड़ेगा, इसकी आवश्यकता है। नीति बनाने की दृष्टि से हम सारी पॉलिसीज बनाएंगे, लेकिन सेटलमेंट्स करना, जॉइंट वेंचर पार्टनर लाना, अगर 5 कंपनी है तो 2 कंपनी निकालना, ये तो पहले प्राइवेट सेक्टर को करनी पड़ेगी ना, और कुछ कंपनीज कर भी रही हैं। Deepshika? So experts, as a follow-up to this question, experts including the chief economic advisor have suggested radical steps like creation of a bad bank. And there is he has given a justification for that. I mean, didn't you think that bad bank is very similar to a asset reconstruction company, except that it's run by the government. Now, I'm not saying it's a very good proposal, but you've just expanded, allowed FDI, liberalized the whole ARC business, and therefore you have a lot of ARCs which have become active. In the last 3-4 months, you have a lot of debtors who are coming up and whose assets are going that way. I think let us experiment this solution. The bad bank suggestion is on the table. The fact that it's not mentioned in my budget speech doesn't mean that it doesn't make sense to us, but it's very much a subject on the agenda. But do you think you have underprovided for recapitalization of banks by only giving 10,000 crore? I have provided in accordance with what was said in the Indradhanush scheme. Okay. 25,000, 25,000, 10,000 and 10,000. This is the 10,000 year. Okay. But I have also said if more money is required, I will be willing to give it out of line. Sir, if I could just go back to one key reform that is leaping out of this budget is on the poll funding. How effective do you think this would be? Because you've only reduced the cap from 20,000 to 2,000. So No. Plus the bond. The bond is the bigger I think measure. the bond is I'll just explain to you. I'm glad you've asked this question. Sir, allow me to add one thing. 2000 के लिए अब 20,000 की जगह मुझे 10 रसीदें बनानी पड़ेंगी, एक बात। और दूसरी बात, वो जो बेरर बॉन्ड है वो बहुत अच्छा कदम है। देखिए, मैं आपको बिल्कुल इसका स्पष्ट बता दूं। 70 साल बाद भी दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र में फंडिंग ट्रांसपेरेंट नहीं है, और आज आपके बहुत ईमानदार उद्योग भी हैं, व्यवसायी हैं, वो कहते हैं कि हमें पैसा निकालना पड़ता है, हम निकालना नहीं चाहते हैं, क्योंकि पैसा निकालना कंपनी में से चोरी है, कंपनी की ताकत उससे कम होती है, आर्थिक क्षमता भी कम होती है। हम इसलिए नहीं निकालते कि हमने एक पार्टी को दिया, सरकार में दूसरी आ गई, वो पूछेगी इसको क्यों दिया। मैं जब कानून मंत्री था तो मैंने एक कानून बनाया कि जो चेक से देगा उसको इनकम टैक्स में छूट मिलेगी, पार्टी को भी मिलेगी, देने वाले को भी मिलेगी। जब प्रणब बाबू वित्त मंत्री थे तो उन्होंने एक और अच्छा सुधार किया कि कंपनी अपने नाम से देने की बजाय एक इलेक्टोरल ट्रस्ट में दे दे, और इलेक्टोरल ट्रस्ट आगे देगा। ये उनका एक और कदम था। इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स के बाद भी हमने देखा है कि मेजॉरिटी फंडिंग अभी भी वही है, और टीवी सारे एक्सपोजर देते हैं कि कैश में पैसा आता है और 20,000 से छोटे डोनेशन दिए ऐसे फर्जी नामों में एडजस्ट हो जाता है, अनोनिमस फेक डोनेशंस। इस आरोप में शायद सच्चाई है, इसलिए अब आगे बढ़ के एक विकल्प को इमेजिन करना है। व्हाट इज दैट ऑल्टरनेटिव? पहला विकल्प यह है कि आप चेक से दीजिए, दूसरा है डिजिटल मोड से दीजिए। ओबामा साहब ने अपने चुनाव में छोटे छोटे डोनेशन मिलियन लोगों से इकट्ठे किए।
मतलब कोई आदमी $100 दे रहा है, कोई 50 दे रहा है, और किसी का एहसान नहीं है और नेट पे आते हैं। मुझे लगता है हिंदुस्तानी पार्टीज को वो शुरू करना पड़ेगा। उसका मैंने प्रावधान डिजिटल पेमेंट्स का किया इसमें। तीसरा, चुनाव आयोग का कहना था कि 20,000 तक फर्जी नाम बहुत बन जाते हैं, इसको और कम कीजिए, इसको और कठिन कीजिए। 2,000 से ज्यादा पे हमने तो 2,000 से ज्यादा पार्टी ले ही नहीं सकती। 2,000 मीनिंगलेस है। अब इलेक्टोरल बॉन्ड कैसे काम करेगा? गवर्नमेंट एक स्कीम बनाएगी, स्कीम के तहत नोटिफाइड बैंक होगा। मान लीजिए स्टेट बैंक नोटिफाइड है, आप उस बैंक से चेक पेमेंट से या डिजिटल पेमेंट से कोई भी डोनर बॉन्ड खरीद सकता है, वो बेरर होगा। वो बॉन्ड कहां इन कैश होगा? एक सीमित 30 दिन का समय दिया जाएगा। मैं 30 दिन उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं, बहुत छोटा समय। रिडीमेबल कहां होगा? हर पार्टी को, हर रजिस्टर्ड पार्टी, रिकॉग्नाइज पार्टी को अपना एक अकाउंट चुनाव आयोग को देना पड़ेगा। 1 पार्टी 1 अकाउंट। वो उस अकाउंट में सिर्फ जाके कैश हो सकता है। मान लीजिए बीजेपी को लगता है कि मुझे 100 करोड़ के बॉन्ड इस इलेक्शन में मिले, कांग्रेस को 80 करोड़ के बॉन्ड मिले, तो हम एक ही अकाउंट में डालेंगे उन बॉन्ड्स को, और वो बॉन्ड्स भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन में ही कैश होंगे। अब इसमें किसने बॉन्ड खरीदे हैं वो तो बैंक जानता है, आगे किस किस को बांटे हैं उसमें थोड़ी सी अनोनिमिटी रहेगी, ताकि इस व्यक्ति के ऊपर जो डर लगता है उसको, अगर हमने वो भी डिस्क्लोज कर दिया तो फिर तो चेक से ही दे दे। That's right. फिर तो चेक से ही दे दे। तो कम से कम इस कदम से जो इंडस्ट्री वाले आकर बेचारे रोते हैं कि हम साइफनिंग करते हैं किसी और को देने के लिए, हमें इससे मुक्त कीजिए, हमें अनोनिमिटी दे दीजिए, हम देने को तैयार हैं। अब वो बॉन्ड्स खरीदे बैंकों से और बॉन्ड्स पॉलिटिकल पार्टीज को दे, हर पार्टी के अकाउंट में बॉन्ड आ जाएंगे। पार्टी को मालूम है मुझे किसने दिया, और टोटल बॉन्ड्स पार्टी अपने रिटर्न में डिस्क्लोज कर देगी कि मुझे इस बार इतने इलेक्टोरल बॉन्ड्स मिले हैं। तो आप कह रहे हैं ये एनोनिमिटी के लिए है, इसमें काले सफेद की लॉन्ड्री नहीं हो पाएगी? देखिए, इसमें काला तो रहा ही नहीं, क्योंकि बॉन्ड खरीदा जाएगा केवल चेक से और बॉन्ड इन कैश होगा बैंक अकाउंट में। तो कम से कम इट विल बी क्लीन मनी, partly transparent, because the identity of the donor is known, Has to be. the buyer is known, but किसको आगे दिया वो। पर ये 20,000 से 2,000 से थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। कम कैश में 2,000 से ज्यादा पे प्रतिबंध है, और अगला क्या कि पार्टी को रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। फिर मैंने कहा कि ये चारों कंडीशंस उसकी टैक्स एग्जेम्पशन का हिस्सा रहेंगी। तो जो पार्टी 2,000 से ज्यादा में कैश लेगी, इट विल लूज इट्स टैक्स एग्जेम्पशन। Let me come back to your revenue numbers. You talked about GST, and the GST Council also debated and discussed the compensation amount which needs to be provided for. Do your numbers, I had a quick look at your budget documents, but do your numbers have somewhere hidden 55,000 crore or 90,000 crore for compensating the states? That will happen. That compensation mechanism has been discussed, finalized, and put to sleep by the GST Council. Okay. That has to be funded from within the GST. So the center will not have to compensate the states' it will losses? come. Today, I'll tell you, today there are several items on which the center is levying taxes. And those taxes are reasonably high. Now, these are taxes are on luxury vehicles. You go up to 40%. Pan masala and your gutka, you go up to very high percentage of tax. Alcohol, you can go up to 65%. Soft drinks, you go a little higher. So all these health-related and luxury products, or even sin products as we broadly call them, the maximum rate of tax on GST is 28%. So that surplus over and above 28% for the first 5 years will become the compensation cess. So you will have that cess will be good enough for you. So that 28% will go into the divisible pool, into the divisible pool, and the one above that will be the compensation fund. Okay. Which the GST Council will decide. Your budget also has a provision for divestment, and once again it is very ambitious. Although in the last 2 years you have not met your
targets, See, let's first of all- 60% increase is for the next year. No, no, So, no. and Let us see on the disinvestment. You see, this government is divesting more but making less noise. okay. In the government led by Mr. Vajpayee, 5 years we divested 27,000 crores. And there was a song and dance every day about divestment. This year I do that kind of amount every year. For instance, this year, as I speak to you today, I have already divested 31,000 this year. I am going to touch 45,000. Yeah, that is what your budget numbers are showing. I'm going to touch 41,000. Now next year, besides the normal divestment, don't forget, I would have listed all the insurance the GIC companies. And under the SEBI regulation, I had to bring down the government holding to 74%. So that is a new area for you to... So, under SEBI, a government on a listed company can't hold more than 74%. So when 100 becomes 74, Okay. But any look at the shortfall- kind of values that is going to generate for us. Okay. Because the disinvestment amount is now really becoming big, 72,000 crore, which is a big 71, chunk. 72,000 crores, but there is now a legal requirement for me So, to divest part of those 5 companies next year. ये Okay. बीमा कंपनियों से पूरा हो जाएगा या कुछ और कंपनियां आप और सोच भी रहे हैं वो होंगी। कौन सी होंगी? देखिए, ऐसा है कि इस वक्त नीति आयोग ने एक बहुत लंबी सूची बनाई है और हमने डिसइन्वेस्टमेंट में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी लाए हैं। हम स्ट्रैटेजिक सेल भी कर रहे हैं, होटल वाला मामला आगे निकल गया है, हम कुछ केसेस में बायबैक कर लेंगे जहां डाइवेस्टमेंट पॉसिबल नहीं है। हम हर तरीके का फ्लेक्सिबल तरीका अपना रहे हैं और मुझे लगता है कि बिना किसी कॉन्फ्रंटेशनिस्ट एनवायरनमेंट को क्रिएट किए हुए, जो पहले क्रिएट होता था, हम आराम से अमाउंट ज्यादा रेज कर रहे हैं और शोरगुल कम कर रहे हैं। ये उस डाइवेस्टमेंट का एक लाभ है। तो जैसे मैंने आपको कहा, इस साल 45,000 करोड़ हो जाएगा एक साल में। वाजपेयी जी के पूरे काल में हम लोग केवल 27-28 हजार कर पाए थे। okay. Sir, if I could just go back to one big policy announcement that happened last year, and this budget has been presented in the shadow of that policy, demonetization, नोटबंदी जिसे हम लोग कह रहे हैं। तो आपने जो करदाता हैं, जो टैक्स पेयर्स हैं, छोटे स्मॉल टैक्स पेयर्स, उनको बेनिफिट दिया है, लेकिन आम आदमी जिसे काफी तकलीफ हुई इस पूरी एक्सरसाइज के दौरान, उसके लिए इस बजट में क्या है? बहुत उत्साह के साथ सरकार का समर्थन किया। वो मुआवजा नहीं मांग रहा था सरकार से, लेकिन इस देश के इतिहास में पहला बजट है जिसमें हर टैक्स पेयर का टैक्स घटा है। कोई इन 3 करोड़ 70 लाख एसएससीज जो हैं, जो रिटर्न फाइल करते हैं, एक भी ऐसा नहीं है जिसका टैक्स बढ़ा हो और एक भी ऐसा नहीं है जिसका कम ना हुआ हो। 5 लाख से नीचे वाला जो बहुमत में है उसका आपने आधा कर दिया। उस पहले 5 लाख का जो एडवांटेज है वो 5 से 10 लाख वाले को भी मिलता है और 10,000 लाख से ऊपर वाले को भी मिलता है। तो जो ऊपर वाले हैं, 12,500 रुपए का वार्षिक लाभ उनको भी मिला है। और इसके पीछे कारण बिल्कुल स्पष्ट था कि मैं 2-3 संदेश देना चाहता था इसके माध्यम से। एक तो टैक्स पेयर और मध्यम वर्ग के हाथ में पैसा ज्यादा हो। सरकारें बढ़ाती रही हैं, हम कम करके ज्यादा पैसा दे रहे हैं। दूसरा, एंट्री पॉइंट पे मैं आकर्षण बनाना चाहता था कि ज्यादा लोग एंटर करें। इसीलिए मैंने आंकड़े दिए कि लोग नहीं दे रहे, आइए एक आधे पेज का रिटर्न फाइल कर दिए, कोई स्क्रूटनी नहीं होगी। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? हाँ जी आई थिंक एक फोनो है प्रोफेसर दीपांकर सेनगुप्ता का, वो आप देख लें कब लगाना है, जम्मू यूनिवर्सिटी से। हाँ, इवेडर है, उसके हिस्से का टैक्स ईमानदार टैक्स पेयर को देना पड़ रहा है। अब डीमोनेटाइजेशन के बाद ये जो 18 लाख लोग कल हमने आइडेंटिफाई किए, जिन्होंने लाखों करोड़ों के डिपॉजिट्स किए हैं और टैक्स नहीं देते या कम देते हैं, उनको मैं घसीट के टैक्स नेट में लाऊंगा। तो ये भले लोग जो उसके हिस्से का देते थे, थोड़ा सा इनको तो रियायत मिलनी चाहिए। सो आई थिंक दिस इज, आई हैव रिवॉर्डेड ऑनेस्टी, at the same time put more money in their hands by, and I am trying to bring in the non-payer into the non-filer into the filing category.
सर इसमें एक सप्लीमेंट्री मैं लेना चाहूंगा। एक्चुअली ये फ्रेमवर्क तो अच्छा बन रहा है, लेकिन इसमें एक क्रिटिसिज्म ये है कि हमको लगता था कि जो आपने वादा किया था कॉर्पोरेट टैक्स को कम करने का, अनलिस्टेड कंपनियों के लिए आपने नहीं किया है, अनलिस्टेड के लिए कर दिया है, बड़े वालों के लिए नहीं किया है। बड़े वालों के लिए आपने इसलिए छोड़ दिया कि छोटे वालों को अभी तुरंत नाराजगी है डिमोनेटाइजेशन की, तो उनको थोड़ा सा रिलीफ देना जरूरी है। आपने इसको खुद भी अंडरलाइन किया है। लेकिन जो दूसरे लोग हैं उनको, जो 5 लाख के ऊपर वाले बड़े ब्रैकेट के हैं, 10 लाख 20 लाख 30 लाख, उनको बड़ी राहत नहीं मिली। देखिए संजय जी, सरकार को छोटों की चिंता ज्यादा करनी चाहिए। इस देश के बड़े वाले बहुत चतुर हैं, वो अपनी चिंता स्वयं कर लेते हैं, और उसका आंकड़ा मैंने बजट भाषण में दिया है। ये जो 96% छोटे वाले हैं, जो एमएसएमई सेक्टर या एक्सपेंडेड एमएसएमई सेक्टर है, ये वैसे भी जब टैक्स देता है तो 30% प्लस के हिसाब से दे रहा है। बड़े वालों की मैंने एवरेज दी, वो सारी एग्जेम्पशंस का लाभ उठाकर वैसे ही 25% दे रहे हैं। तो जो वैसे ही 25 दे रहा है वो इस लाभ का भी हकदार नहीं है। और जो व्यवस्था के अनुकूल चल रहा है और 30% दे रहा है, और जॉब क्रिएशन, क्षमा कीजिए, ये छोटे वाले ज्यादा कर रहे हैं। डीमोनेटाइजेशन का भी प्रभाव हुआ तो इसी एमएसएमई पे हुआ। इस देश में 5 करोड़ 10 करोड़ या 50 करोड़ या 100 करोड़ तक का जिसका टर्नओवर है, आप इंडस्ट्रियल एरियाज में देश भर में चले जाइए, यही लोग हैं जिनके उद्योग चलते हैं, और मास जॉब क्रिएशन यही कर रहे हैं। क्या ये कहना उचित होगा कि डीमोनेटाइजेशन जिस प्रकार से हुआ, उसकी एक चिंता और बोझ आप पर बड़ा रहा, उसको आपने बहुत बड़े पैमाने पर एड्रेस करने की कोशिश की है? अगर डिमोनेटाइजेशन इस प्रकार से न होता तो आपके हाथ में थोड़ा स्पेस ज्यादा होता, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती। नहीं, देखिए, मैं मानता हूं कि इस देश में डीमोनेटाइजेशन जो हुआ वो एक आदर्श तरीके से हुआ। ये जो टेलीविजन चैनल की दुनिया में आप रहते हैं, और इसलिए 10 दिसंबर को आप 8 नवंबर का क्यों दिखा दें और न्यूज बना लें जो टेलीविजन करते रहे हैं, वो उचित नहीं। आप मुझे एक चीज बताइए, क्या इस देश में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ डिमोनेटाइजेशन के खिलाफ? क्या इस देश में लोग सफर किए, एक सोशल प्रोटेस्ट हुआ या अनरेस्ट हुआ डिमोनेटाइजेशन के खिलाफ? क्या ये सच नहीं कि हर ओपिनियन पोल में 70-75% लोग कहते हैं कि हम इसके पक्ष में हैं? क्या इसकी सच्चाई नहीं है कि किसके पास कितना कैश ट्रांजैक्शन था? आज कैश एज अ वे ऑफ लाइफ को हमने बदल दिया है। कैश एज अ वे ऑफ लाइफ। आज आप प्रॉपर्टी खरीदने जाएं तो कोई आपको नहीं कहेगा कि 40% कैश में दो। आज स्कूल के टीचर को आधी तनख्वाह कैश में दी और दस्तखत किसी और पे करवा लिए, ये नहीं होगा। आज मजदूरों को भी तनख्वाह चेक से मिलने लग पड़ी है, ताकि वो उसके बाद सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट लेने की कोशिश करेगा। तो आज एक वे ऑफ लाइफ बदला है। आपको लोग कहते हैं कि मैं बटुए में इतने दिन से पैसे लिए घूम रहा हूं, खर्च करने की नौबत ही नहीं आती। अब एक व्यवस्था लोगों ने अपनी बदलनी शुरू की है, और मुझे लगता है कि इसके जो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट है, और तकलीफ कितनी थी? तकलीफ ये थी कि पहले 6-7-8 दिन क्यों लगे, उसके बाद कम होने शुरू हो गए, और धीरे धीरे एकदम समाप्त हो गए। अभी तक पूरा रिमोनेटाइजेशन नहीं हुआ। हम 10 लाख करोड़ के करीब पहुंचे हैं। कुछ और रिजर्व बैंक करेंसी छोड़ेगा, लेकिन सामान्य जनजीवन चल रहा है। मेरे पास कल राज्यों के इनडायरेक्ट टैक्स के दिसंबर के फिगर आए। जब मैंने नवंबर के स्टेट रेवेन्यूज के फिगर दिए तो 2-3 राज्य छोड़ के बाकी सब में बढ़ोतरी थी। उसके पीछे एक कारण यह भी था कि हमने कैश में जमा कराने की अनुमति दे दी, तो बैलेंस शीट में उद्योग पैसा नहीं रखते थे और कैश में जमा करा रहे थे। कल मेरे पास दिसंबर के आंकड़े आए। मैं चाहूंगा आप करिए। बड़े राज्यों में पश्चिम बंगाल और दिल्ली को छोड़ के हर राज्य का वैट कलेक्शन दिसंबर का बढ़ा है, जबकि कैश फॉर्मल इकोनॉमी है। और उसके पीछे कारण ये है कि पहले अगर 100 में से 60 का धंधा वो करता था चेक से और 40 का करता था कैश में, वो 40 में से 10-20 तो अब 80-90 आ गया। तो जो फॉर्मल इकोनॉमी का एक्सपेंशन हुआ और डिजिटलाइज होने से बैंक्स की जो क्षमता बढ़ी, आज बैंक्स की लेंडिंग कैपेसिटी भी बढ़ गई, ब्याज दर भी कम हो गया, रेवेन्यू भी बढ़ गया, ये सारे जो लाभ दे रहे हैं। ऐसे ही आज का बजट पेश हो गया कि किसी के ऊपर 1 रुपए का टैक्स का बोझ नहीं डाला और बीसीओ लोगों हर आदमी को टैक्स का रिलीफ दे दिया।
आप डिमोनेटाइजेशन का ये इंपैक्ट क्यों नहीं, कोई दूसरा बजट याद कीजिए कि किसी पे टैक्स का बोझ ना पड़े और हर आदमी को टैक्स का बेनिफिट मिल गया। बिल्कुल। If you can move to your other reformist measure in this budget, the one was of course the political funding. That was the abolition of FIPB. Do you have any roadmap on how FIPB will be abolished, or will you allow this to be decision taken by the cabinet committee? No, you see, we'll finalize that procedure, but on facts, foreign direct investment has become easier at the entry point. 90% of FDI today is automatic route. So FIPB is not required. FIPB is required in 10% cases. Now earlier investor had to wait 1 year, 2 years, 3 years, and all kinds of questions were raised about the FIPB. Today you get immediate permissions, there are no controversies. Now in most of these 10% cases, you actually require some clearance or recommendation of the parent department with which that industry is connected. Yeah. And then you require FIPB. Both go into the same set of considerations. So every investor out of this 10% left has to jump 2 hurdles which are identical in nature. So abolish this and get it done, cleared by the ministry. Get it be done by the relevant ministries. After all, the ministries are no less competent than the finance ministry. So if in your, let us say, in your broadcasting or media, somebody is coming in, let the INB ministry. So you're giving up your own powers, Mr. Minister. So that's what liberalization is all about. That's what reform is all about. That's one question, you know, your critics will say that you haven't done enough for defense because the defense outlay has gone up only by 6%. So is that, and particularly our neighbors are not being very friendly. See, I'll tell you, so what is your if the outlook? defense can speeden up their acquisition mechanism, they will get as much money as they want. You see, budgetary allocations are just indicative of defense. Defense gets the best priority in this country. So this amount plus pension amount, there is a large pressure on the budget. But if it is required for defense for their procurement, I think we can even go and find revenues available for defense. Okay. Sir, on job creation, I mean, that is emerging as a crisis for the economy. What are the measures do you think that will lead to job creation in the country? See, I'll tell you, when I encourage the MSME, I encourage job creation. When I double the Mudra allocations, it's job creation. When you take all these steps which give a boost to the economy, you encourage job creation. So you can't delink these steps and say that job creation is an independent chapter which will operate independently from the economy. Now, just take even a UPA flagship scheme which I have adopted, Manrega. Now, last year I allocate, what the UPA used to do, allocate 40,000, spend 24,000, 27,000. I allocated 38,000 last year. Because of the pressure on the informal economy, I spent 47,000 this year. And next year, realizing that there will be migration from informal to formal, so I have allocated 48,000. So I am not standing on prestige that this was a UPA scheme or our scheme. As long as I have a scheme which is a government scheme, I am willing to do it. In fact, 2 of the schemes which we have adopted, Manrega, I am spending more money than the UPA did, and secondly, one scheme on which they were completely directionless. Hats off to Nandan Nilikani for creating the whole Aadhaar idea and the platform. I gave it the statutory support, and we are now putting it to such effective and almost as good a user as possible. सर, आधार पे एक सवाल, लेकिन उसके पहले जॉब पे थोड़ा और आप इसको विस्तार दें। बहुत सारी चीजें हैं जो जॉब को क्रिएट करें, और ये फिक्र सरकार की साफ इस डॉक्यूमेंट में दिख रही है। क्या ये माना जाए कि आपका जो हाउसिंग का जो पूरा प्लान है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर का है, वो 1 साल में इस लेवल तक एग्जीक्यूट हो पाएगा कि जॉब क्रिएट हो? क्योंकि नरेगा वगैरह से तो तुरंत काम शुरू हो जाएगा। संजय, मुझे लगता है कि एग्जीक्यूशन एक आरोप नहीं लग सकता। कारण ये है कि एग्जीक्यूशन में हम जितना बजट एलोकेशन होता है, हर साल फाइनेंस मिनिस्टर को एक कंफर्ट मिलता था
कि 7-8% बच गया। तो अगर 15 लाख करोड़ पे 6-7-8% भी बच गया तो आपको लगता था 70-80 हजार करोड़ की तो बचत हो गई, तो टैक्स कम भी आया तो कर दे। मैंने इस बार 1 जनवरी को चेक किया, इस साल का 81% खर्च हो चुका है। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये लगभग 86-87% इस साल का खर्च हो चुका है, 2 महीने और हैं। और इसलिए ये 100% पे नहीं रुकता हमारा इस साल का खर्चा, वो 100 से हटकर 104-106% तक जाता है। और उसके पीछे कारण यह है कि जो सरकार के मुखिया हैं, इंप्लीमेंट करने में वो कोई कसर नहीं छोड़ते, चाहे हर मंत्रालय में कहां इंप्लीमेंट हो रहा है कहां नहीं हो रहा। अब रेलवेज ने खर्च किया, हाईवेज को जितना पैसा दो वो खर्च करता है। ग्रामीण सड़कों में 19,000 हम दे रहे हैं, 8,000 8,500 सरकार राज्य की देती है, 27,000-28,000 करोड़ रुपया हर साल का पिछले 2-3 साल से खर्च हो रहा है, आने वाले साल में भी खर्च होगा। और ग्रामीण सड़कों का तो ये वाला चैप्टर हम 2019 में समाप्त कर देंगे। विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन, ये सारा एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी बड़ी मात्रा में खर्च हो रहा है। मुझे उसमें बचत की 1 रुपए की गुंजाइश नहीं लगती, ज्यादा ही लगेगा। Mr. Finance Minister, before you presented the budget, there was a lot of discussion on a scheme called Universal Basic Income. Even your Chief Economic Advisor had an entire chapter devoted to the need for Universal Basic Income. Is that idea still on the table, Well, or what are your thoughts on that? I think Arvind Subramaniam's idea, which of course is now being globally discussed, Yeah. to say the least, it's a wonderful idea. Mahatma Gandhi also liked it. You see, and in the economic survey, which I must say is one of the best drafted documents that I have ever read, he has put it as Gandhiji's conversation with himself. That the poorest, the Daridra Narayan must have some income in his hand, and it's a responsibility of the state. Now you look at it from another point of view. You take all the subsidies of the state, which the state is giving. Now both you and I, till recently, were getting LPG subsidy. That's right. We are even today in Delhi getting kerosene subsidy. That's true. We get this 55,000 crores I have given to railways is a subsidy. So when you travel by an air-conditioned compartment, you and I will get a subsidy. Yes. Your fertilizer, forget the poor, even the rich man gets a subsidy. So now subsidies become untargeted. We talk of targeting it. We've substantially used the JAM platform for targeting it. Similarly, the states are giving it to of different kind. The welfareism in the states is far higher. Now you add all these subsidies, and to let us say 30-35% of the families, instead of these subsidies, cut out a basic income check and give it to them. They can do some additional work, Manrega or some more unorganized sector employment, and earn a little more. Targeted and reaches the poorest, doesn't reach anybody else. The difficulty that I see is that India's politics is yet to mature. And in a politics which has not matured, you'll have a kind of demand coming, continue the existing set of subsidies and give universal basic income, which is something which is not possible. That's right. The universal basic income is an alternative to the current structure of subsidies. And therefore, if India's politics can mature, I think Arvind's idea on the table, economic survey puts at times ideas for future debate. Last year, he put a brilliant chapter, subsidies for the rich, and which set all of us thinking. This time he's put universal basic income. And I think both these ideas merit serious discussion amongst opinion makers. But you seem to suggest that it is an idea whose time hasn't come. I think it's an idea whose time should come. Okay. And I think Indian politics, if it is able to rise to a certain level of majority must get an opportunity to debate. And if I understood you correctly, as long as other subsidies exist,
universal basic income should Where not are be the introduced. resources? Where are the resources? We have run out time, so we need to have one more quick questions to the finance minister and be तो done with क्या it. मैं ये अटकल लगा सकता हूं कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम आप 2018 में सब्सिडी के पैसे का बेहतर इस्तेमाल करने के देखिए, मैंने इरादे ऐसा से नहीं इंट्रोड्यूस कहा। करेंगे? मैंने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि मुझे अभी पॉलिटिक्स क्या दिशा लेती है और पॉलिटिकल चर्चा और उस पर ओपिनियन मेकिंग क्या दिशा लेती है, ये तो राजनीतिक कंसेंसस बनेगा तो संभव है। पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग होगी तो कोई अपनी उंगली जलाने की कोशिश नहीं करेगा। हाँ, एक और सवाल है, डीमोनेटाइजेशन के अलावा ट्रंप आपके दिमाग में कंसर्न के तौर पर कितने थे इस बजट को लिखते वक्त? देखिए, वो एक रेलेवेंट फैक्टर है और मैंने ओपनिंग पैराग्राफ्स में कहा, विशेष रूप से वहां ब्याज दर बढ़ना, वहां इनफ्लोज करेंसी के दुनिया भर से आना, और ये ज्यादा चिंता का विषय है। जॉब्स एक इंपॉर्टेंट चिंता का विषय है और इसलिए हम ऐसा कोई कदम न उठाएं जिससे एफडीआई आउटफ्लो हो, और इसलिए एफडीआई इनफ्लो हो, उसको बैलेंस करने के लिए उस दिशा में हम लोग कदम उठाएं। One last So question one from last you. question that I have is on the proposed mechanism that you plan to bring in for, defaulters who run away after taking loans from I'll tell Indian you, banks. I was wanting to put that mechanism. We are discussing it. Reason being, there is already a provision for declaring a person a proclaimed offender, attaching his assets. Then there is an issue that those assets, some of them may have to be made available to financial institutions, because there are several issues which will have to be resolved in that process, and therefore I have indicated the intention of the government. I've already got an expert group informally looking at it, and as soon as it is ready, I'll put it in public space. So we'll be able to deal effectively with people like Vijay Mallya and so on who've No, been I don't in want to news. get into names, but you see, this whole phenomena of using the Indian system, breaking the law, Okay. and then going and happily settling down somewhere in the world. And I am very disappointed. I've heard of various havens for the absconders, but London being the center of a civilized country, of one of the most civilized democracies in the world, to become a haven for these people is something disheartening. सर, आपने Yeah, 10 मिनट और एक्सटेंड करने की इजाजत दे दी है, तो एक सवाल और इसी से जुड़ा हुआ पूछना चाहूंगा। बेसिकली आपने बहुत ढंग से आर्टिकुलेट किया है, ये मैसेजिंग के लिए है। इनफैक्ट नोटबंदी के बाद हम उम्मीद करते थे कि स्टेट टैक्स और ब्लैक कैश के बाद ब्लैक वेल्थ पर बहुत बड़ा अटैक होगा। तो जैसा आपने कहा कि ये मैसेजिंग के लिए है, लेकिन इससे कोई बहुत बड़ा काम होने नहीं जा रहा है जो एब्सकॉन्डर है उनके देखिए, बारे में। ये तो पनिशमेंट प्रोविजन है कि कोई ऐसा इस देश का मजाक ना उड़ा पाए, यहाँ के सिस्टम और व्यवस्था और पैसे और साधनों को इस्तेमाल करने के बाद। ये जो आपने कहा कि ब्लैक मनी, किसी सरकार ने डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को मद्देनजर रखते हुए भी इतने कदम ब्लैक मनी पे नहीं उठाए होंगे जितने हमने उठाए हैं। अब व्यवस्थाएं पूरी हैं। अब ये जो कल सीबीडीटी ने घोषणा की कि जो ये 18 लाख लोग हैं, उनकी साइट पे उनको सूचना मिल जाएगी, भाई आपने इतना किया है, इसका साधन बता दीजिए और आपने इस पे टैक्स दिया कि नहीं आया। सर, वो रकम करीबन 9-10 हजार करोड़ की है। नहीं, ये जो कल नाम दिए हैं, देखिए, जिन लोगों ने ये डिपॉजिट्स किए हैं कैश के, जो एक संख्या से ऊपर है, वो लाखों करोड़ों में है, हजारों में नहीं है। Sir, एक काले धन पर Yeah, sorry. One question. I thought no budget discussion can be complete without a discussion on fiscal consolidation, and you have raised this target to 3.2%. While it is understandable in the current situation, you also indicated that it will be 3% the following year. I'll tell you. And so, do we take it that the NK committee report, what is the status of that report? I'll tell you. And more particularly, there is this big debate going on about what should be the government's approach towards debt as a percent of GDP. Should that also be a yardstick? So as a finance minister, what's your See, I'll tell you. perspective on this? The NK Singh committee, there are two views which have been expressed in the committee. Yeah. The members have expressed a view that this year you should bring down 3.5 to 3, give a pause Yeah. for a period of 3 years,
and then go down further. Okay. That's the predominant view. There is an alternate view suggested in the same direction, which doesn't talk of the pause, which says over the next 5 years, have a glide path of 0.2% each year. And Okay. 3.5 will become 2.5, and the 0.2 burden each year will be an absorbable burden. Okay. Okay. That is Arvind's view. That's right. So you have one graph which goes like this, and the other graph which is gliding. Okay. Both the graphs are in the same direction. So I take them as parallel views. Now, this year I was faced with the option of spending more. Because others are not spending, I have to spend more. So can I take a 0.5 hit, which is something as high as 85,000 crores less expenditure? That's right. I tried to balance it, I couldn't. If my revenue estimates go wrong, and instead of 12% tax buoyancy, I am able to have 14 or 15, I'll probably try and reach that. Is that a promise? No, because consolidation is an object. Okay. But I found that by going instead of 3.2, and then having instead of 3 years, a 2-year pause at 3. Okay. So going by what the majority predominant view is, I can probably follow that as a course which is easier. What about the debt to GDP You see, parameter? debt to GDP is just historically accumulated. Okay. And therefore, if you are to bring it down, you have to bring your current deficits down. That's where we are struggling at the moment. Okay. So even my revenue deficit now, compared to last year, I brought it down. I'm in fact 0.1% ahead of the target. And this year, coming year, I fixed it at 1.9. Okay. Okay. So Deepshikha, the one committee final- on allowances of government employees, which was suggested by Pay Commission, I believe has finalized its report. But there is no provision made in the numbers in your budget. So You see, when they fix the various departmental figures, they factor in the likely expenditure of establishment cost. So that, like the Pay Commission was last year factored in, similarly that's factored in. Mr. Finance Minister, we have to come to the end of this discussion, but before I let you go, I'll ask you this one final question, that you had promised to India Inc. that you will bring it down, their corporate tax rate, to 25% over a period of 4 or 5 years. And next year will be your last budget in the tenure of this government. So do we take it that You see, my this tax period reduction will have to wait a little longer? I had linked it to phasing out the exemptions. Okay. Now, should I phase out exemptions ahead of time? The answer is no, because Okay. companies are not in the best of health. Okay. So I don't want to inflict one more pain on them. Okay. And therefore, as my ability in phasing out exemptions improves, I have, in accordance with that, followed my promise. So the trend I am following is the same. Okay. And today, what I have done, I have extended it to a very large part of India's corporates. The big boys who are left out, I think are big enough to take care of themselves at the moment. Okay, thank you. Yeah, thank you very much, Mr. Minister. Thank you, Deepshikha. Thank you, Sanjay. We have come to the end of this wonderful discussion. I think the broad message that you get is that the Finance Minister believes in a path of fiscal rectitude.